जय राधा माधवा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Jagannath Baladeva Subhadra Maya Sudarshana Jai Jagannath Jagannatha Baladeva Jai Subhadra Maya Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Hari Bol 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Hare Krishna Hare Bhavam Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Maya Sudarshana Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Maya Jaya Nitai Gaurango Nitai Gaurango
Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll be starting our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshvapatreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktirubhavati Nashtiki. So we were discussing in our previous session. So unfortunately, the mic is not working well in this. The mic which I was using is not working very nicely. So that's why I'm using the system mic. So I don't know how the sound will come. But anyways, let us. I think you'll hear decent sound. So we discussed in our previous session that Maharaj Parikshit, how he is so angry at this Kali Purusha or the agent of Kali Yuga, who is about to punish Mother Earth. Sorry, Mother Earth in the form of a cow is punishing. And Maharaj Parikshit, he is saying that in this Kuru dynasty, in this whole lineage that we have, no one has ever dared in our kingdom to touch a cow. And so you should not lament, my dear mother. So his request, he's basically giving consolation to mother cow that please don't feel bad, and I will do everything good to restore your lost opulence. So a king like Maharaj Parikshit is required to bring the society back into its lost glory. Now today we'll start with Shloka number 12, text 12. Ko vrishchattava padam strim saurabheya chatushpada ma bhuvam svadrisha rashtre Ragyam Krishnanuvartinam. Ko vrishchattava padam strin saurabheya chatushpada ma bhuvam stvadrisha rashtre Ragyam Krishnanuvartinam. Translation. He, Maharaj Parikshit, repeatedly addressed and questioned the bull. Thus, O son of Surabhi, who has cut off your 3 legs, in the state of the kings who are obedient to the laws of the Supreme Personality of Godhead Krishna, there is no one as unhappy as you. So now you see, Maharaj Parikshit is very angry at that how this bull, how he is suffering just on 1 leg. And he is the personification of Dharma. Dharma personified the bull. So what is he saying? So he says, Ko avrishchat tab padam strin. My dear bull, Ko avrishchat tab padam strin. Who has dared to cut off your 3 legs? And Saurabhya Chatushpada. And you are just standing on your 4th leg, Chatushpada. Chatushpada means that you are 4-legged person, but your 3 legs are being cut off by who? Who is the person who has done that?
Ma bhuvam twadrisha rashtre. Rashtre. In this whole earth, bhuvam means whole earthly planet. So in this whole world, twadrisha rashtre. In this whole world, there is no one. Twadrisha means like you. Rashtre, in this whole world, in this whole kingdom of ours. Now, kingdom of Maharaj Parikshit means the whole world, right? So he's saying, in this whole world, Ragyam Krishnanuvartina, all the kings who, by family, like my grandfather Yudhishthir, my father Abhimanyu, our great grandfathers, Bhishmadev, Maharaj Shantanu, they all have been great followers of Krishna. You see, the word is used here. Krishna Anuvartina. We are all Krishna Anuvartina. Anuvartina means we are all followers of Lord Krishna. So what does it mean? It means that every king must follow the injunctions given by Lord Krishna. That's why Krishna gave this knowledge to Arjun. Again, a Kshatriya. He did not give this knowledge to some person, some ordinary person. No, he gave this knowledge to Arjun. So every Kshatriya or every administrator or every king in the society, they must act according to the directions given by Lord Krishna to fulfill the mission of the Lord on this earthly planet. So king is considered to be representative of God. Why? Because he has to enact or enforce the laws of God. But for that, first of all, he needs to know the laws of God. First of all, he needs to understand what is the Bhagavad Gita, isn't it? If he does not know the injunctions of God, then how will he implement or how will he enforce the laws? Now, to enforce the laws, he needs to know the laws. And that is why every king or every administrator must know the Bhagavad Gita. It's a must for everyone. It's not an optional thing to understand the Gita. No. It's a must for everyone to understand the Bhagavad Gita. And wherever the codes of Bhagavad Gita will be followed, automatically all good fortune, all prosperity, everything will be nice in that kingdom. Everyone will be happy. And we see here that wherever these codes are not followed, like here Maharaj Parikshit is saying, that wherever the laws given by Lord will not be followed, there will be miseries. Automatically, those miseries will come in that kingdom. And as we see here, the bull, Dharma personified, he has just one leg left. So wherever the codes of Dharma or codes of Lord Krishna is not followed, there cannot be happiness in that society. People will be miserable. And second thing is that there will be only one leg of religion, Dharma, left, which is very dangerous symptom of a society. So Maharaj Parikshit is lamenting for the condition of this bull, Dharma personified. Now text 13, shloka number 13. Akhyahi vrishabhadram vaha sadhunam akritagasam atmavairupya kartaram parthanam kirti dushanam. Akhyahi vrishabhadram vaha sadhunam akritagasam atmavairupya kartaram parthanam kirti dushanam. Translation: O bull, you are offenseless and thoroughly honest. Therefore, I wish all good to you
Please tell me of the perpetrator of these mutilations which blackmail the reputation of the sons of Pritha. So Maharaj Parikshit is worried about the reputation of his lineage, of his ancestors, of the whole lineage of the Kuru dynasty, in which there have been great saintly kings like Maharaj Shantanu, Bhishma Dev, Yudhishthir. So he is thinking about that great lineage. So that's why he is saying here that Akhya hi Vrisha Bhadram Vaha. Oh Vrisha. Vrisha means the cow or the bull. Bull is called Vrisha. Oh Vrisha, Bhadram Vaha. Bhadram means that I want you to be good. Bhadram Vaha, I wish all good fortune to you. Sadhu Nam Akritagasa. Because Sadhu Nam Akritagasa. Because this is not the work of a sadhu. This is not the work of a saintly person or a good person. No. Atma Vairupya Kartaram. Atma Vairupya. Atma Vairupya means a person who has done something which is against the codes of Atma or Dharma, or you can say against him or against you. The work has been done. So Parthanam Kirti Dushanam, it is destroying the good name or good fortune or good name and fame of our lineage, of our family. Parthanam, Parth. It is destroying good fame of my grandfather, Parth, Arjun. You see? So he is very much worried about ill fame of his grandfather, Arjun. So whenever you hear about a good king, whose name comes first in our mind? Whom do we think, oh, he's a good king or a great king? Whenever we hear of good regime or good ruling of a king, we always talk of Ram Rajya, isn't it? Ram Rajya. Raja Ram, we say. King Ram, Lord Ram. The greatest king who ever appeared on earthly planet is Lord Ramchandra, Lord Ram. Why he is the greatest king? Because no one in his kingdom was unhappy, not a single person. And why that was there? Because when the Lord is only the king, how can there be any misery? All the demigods will come and bow down before him. So there can be no scarcity of anything. Everything is profoundly present on earthly planet. People are happy. Everything is happy. Everyone is happy. So that is Lord Ramchandra's kingdom. Now, all these kings, the Kuru kings also, they were all following the footsteps of Lord Ram only in their ruling, because they were all following, in one sense, the same codes. Because Lord Ramchandra, the codes that he followed, that the citizens come first. He's ready, Lord Ramchandra, he sacrificed his wife, his sons, for the benefit of the whole kingdom. That is the greatness of Lord Ram. Nowadays, we see people sell everyone, their whole state or their whole country for their wife. But Lord Ramchandra did the opposite. That is the meaning of a king, an ideal king, that he is not attached to his family. He is attached to his people. He's attached to he's doing his duty. His duty is paramount. Even family matter does not come. So basically, he set the right example for all the kings.
That when it comes to the protecting the country or protecting the people, then we should be ready to sacrifice even our family, even our sons and daughters. Not like Dhritarashtra, so attached to his son that he is treating his own, nephews or his own people as enemies. You see the difference between Dhritarashtra and Lord Ram. So that's why Lord Ram is considered Raja Ram, the greatest king who ever walked on earthly planet. And all the Pandavas, they were all following the footsteps of Lord Ram. And one of the characteristic of a great king is that he is a protector of the most important animals in the society, cows and bulls. Because even excreta of these animals, urine and stool, are so special that they are used to in many medicinal, they have a lot of medicinal properties. They have a lot of, uh, if you go to any place of worship in Sanatan tradition, now as soon as you touch stool, you have to take baths. That is the Vedic custom. That as soon as you go to clear your bowels, then immediately you have to take baths. Right? That is the Vedic custom. But if something becomes impure, then to purify that, you have to use the stool of a cow. Just imagine. Ordinarily, any other stool of any other species is forbidden, except cow's stool. That cow is so pure animal that the stool of a cow is used to purify things. Urine of a cow is used to purify a place. Just imagine. So that is the status of the animal cow. And many scientific discoveries have also proved that cow urine and cow stool has a lot of medicinal properties. So the kings, that's why it's their duty to protect the cows and bulls. And Maharaj Parikshit, he is worried about the reputation of his ancestors, the reputation of his great grandfathers, forefathers, and it should not get uh, disturbed by all this nonsense which people are doing in the name of Kali Yuga. Now, text 14, shloka number 14. Janena gasya gham yunjan sarvatosya cha madbhayam sadhunam bhadrameva syad asadhu damane krite. Janena gasya gham yunjan sarvatosya cha madbhayam sadhunam bhadrameva syad asadhu damane krite. Translation: whoever causes offenseless living beings to suffer must fear me anywhere and everywhere in the world. By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. Now you see, what is Maharaj Parikshit saying? That in this whole world, whoever it may be, you see, Jane anagasi. Jane anagasi. Agha means those who are sinful. And anagha means who is not sinful, sinless people. So Jane, any person who is sinless, agham yunjan, they must fear me. Sarvato asya cha madbhayam. Those who are causing disturbance to people who are sinless or innocent people, they must fear me. Sarvato asya, wherever that person may be, in this whole world, wherever that person may be, he should fear me. You see, that is the meaning of a king. King
he is not a cozy person. Like nowadays, politicians, no? Oh, you want this? Okay, take this. You want this? Okay, take this. Like there is an instance in history. So this Gandhi. So some people who were followers of Vedic tradition, they went to Gandhiji to tell him that there is a sect who kills cow. So you should stop them. No, you are Gandhi. Uh, you are called as the father of the nation. So you should stop them. So you see, you just imagine what he says, Gandhi. So he said that no, it's their religion. What can I do? Very nice. Then today I will also make a religion. Okay. Now I have some people who follow me. So I will also make a religion. And in this religion, I'll make it mandatory to kill animals. To kill human beings and eat. Will you allow that in the name of religion? What is this nonsense? Just imagine. What nonsense? That is, some person has made a religion in which you can kill a cow. You will allow that. So then another person will come and he will create a religion where you have to kill human beings and you will allow that also. What is this? Is this religion? Can every person in this world decide his own religion? Oh, I want to. So suppose there are 7 billion people in this world, then there will be 7 billion religions. Everyone will follow his own religion. Is it justified? All these things? No. We cannot create dharma. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. What is dharma? I and you cannot decide dharma. Religion is decided by God. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Bhagavan, he is spoken. That is called dharma. What the Lord speaks. So when such people, they become father, mother, grandfather, grandsister, whatever of the nation, then that destroys the whole society, country, everything. So an executive head, a king, must be like Maharaj Parikshit. What is he saying? You see here in this shloka. Jane nagasya gham yunjan sarvatosya chamad bhayam sadhunam bhadramev syad asadhu damane krite. Wherever that person may be in this world, he should fear me. Who? A person who tortures an innocent person. Anyone who is torturing an innocent person, he should fear me. Why? Sadhunam bhadrameva syat. Because sadhunam bhadram. Sadhunam bhadram means doing good to a sadhu, protecting a sadhu, or when you to protect a sadhu, asadhu damane krite. To protect a sadhu, you see, sadhunam bhadram. Bhadram means to do good to sadhus, to benefit them. If you want to benefit saintly people, asadhu damane krite, you have to kill asadhu, those who are not saintly, those who are miscreants, those who are demons, those who are killers of cow, bull, they must be killed. That is the meaning of politics. That is the meaning of ruler, administrator. Not that, you want to kill cow, okay, you kill. Okay, you want to worship cow, okay, you worship. What is this nonsense? No, you cannot decide. The Lord has given everything in the Bhagavad Gita. So king means he has to execute the order of the Lord. And that will bring peace and harmony in the whole society. Otherwise,
if we want to create a society on the foundation of blood of cows and bulls, the foundation of this society is blood and flesh of cows and bulls, how can we expect such society to be good meaning and a good society? It's impossible. So you see, such things are going on in the name of religion in Kali Yuga. We all can see that. Maharaj Parikshit, he is telling that he's the right king to rule this earthly planet. Now, text 15, shloka number 15. Anagashva Anagashva iva bhuteshu ya agaskrin nirankushaha ahartasmi bhujam sakshad amartasyapi sangadam. Anagasviha bhuteshu agaskrinnirankushaha ya agaskrinnirankushaha ahartasmi bhujam sakshad amartasyapi sangadam. Translation: an upstart living being who commits offenses by torturing those who are offenseless shall be directly uprooted by me, even though he be a denizen of heaven with armor and decorations. You see, so Maharaj Parikshit is saying that even if demigods come, I will punish them if they commit offenses by torturing cows and bulls, by torturing innocent animals. Even if demigods commit offenses, I will even kill them. Just imagine. And who is Maharaj Parikshit? He is a follower of Krishna. You see, the first shloka that we discussed today, I'll take you to that shloka. You see on your screen. What is Maharaj Parikshit saying? The first shloka that we discussed today. Yeah, you see. Ragyam Krishna Anuvartinam. We are all followers of Krishna Anuvartinam. We are all followers of Krishna. Right? So although he is a follower of Krishna, but he is ready to punish even demigods if they torture a cow or torture an innocent animal. You see? Anagas iha bhuteshu. Those who are anaga, anaga means sinless or faultless. Those living entities who are faultless or sinless. Ya agaskrin nirankushaha. And those people who are offenders of such innocent animals. Ahartasmi. Ahartasmi. I will bhujam sakshat. I will punish them with my arms. With my bhujam. Bhujam means my own arms. I'll use to punish them. Amartasyapi sangadam. Even though he may be amartasyapi. Amar means one who never dies. Amar. Amar means who can never die, or whose life duration of life is endless. That such a person is called amartasyapi. So here in this shloka, Maharaj Parikshit is referring to Amar means demigods. Now demigods became immortal. Why? Because they drank the drops of nectar which came out of the churning of the milk ocean. We'll discuss in detail in the next chapters. But that's what here Maharaj Parikshit is saying. That even a demigod comes, I will punish him. So Amar, why demigods are called Amar? Because it's not that they don't die. But you see, our duration of life is hardly 100 years, not even 100 years nowadays. But the duration of
The duration of life of a demigod is many millions of years. So according to human calculation, because our lifespan is hardly 100 years. So according to our calculation, the life of demigods is almost like endless. That's why they are called Amar. Not that they will not die. After some millions of years, they will also die. But at least we will not be able to see. Why? Because our lifespan is very limited and the lifespan of demigods is huge. And that's why it looks as if that they are immortal. But actually, they are also not immortal. They also die. But just that their duration of life is huge, very, very long, millions of years. So according to our time scale, if we see them, they look like immortals. But they are not immortals. Otherwise, why Maharaj Parikshit will say that I will kill even them? Although they are deathless, they cannot die, but still Maharaj Parikshit is ready to kill them. Just imagine the prowess, the power of Maharaj Parikshit. How powerful king he was. That such a king can only protect dharma properly. Such a king can only such a king is fit to rule this earthly planet, who is ready to punish anyone and everyone for any sin that they do. So punishment is a reward given by the king to a person who is sinful. It's a reward because a sinful person will go to hell. If he commits sin and if he dies without punishment, he'll go to hell. So if some punishment is given here on earth, his hellish life will be saved. He'll be saved from his hellish conditions. So that is why sometimes this punishment is all good for the miscreants. Now text 16, shloka number 16. Ragyo hi paramo dharmaha swadharmasthanu palanam shasatonyan yatha shastram anapad utpathaniha. Ragyo hi paramo dharmaha swadharmasthanu palanam shasatonyan yatha shastram anapadyuta pathaniha. Translation. It is the supreme duty of the ruling king to give all protection to law-abiding persons and to chastise those who astray from the ordinances of the scriptures in ordinary times when there is no emergency. You see, now what is Maharaj Parikshit saying? What is the duty of a king? So he says, Ragyo hi paramo dharmaha, the parama dharma of Ragya. Ragya means king. The parama dharma, the highest duty or highest religion for a king is Swadharma sthanu palanam. Swadharma sthana anupalanam. That everyone follows his swadharma. He has to see that. You see, swadharma sthanu, swadharma stha anupalanam. Stha anupalanam. That everyone is fixed up in his swadharma and they are following their swadharma. For example, a brahmana is doing the duty of a brahmana. A Vaishya is performing the duty of a Vaishya and a Shudra is performing the duty of a Shudra. That is the duty of a king, to see all these things. To see that dharma anupalanam, that everyone is following dharma perfectly. That everyone is following the tenets of dharma, following Sanatan Dharma, especially everyone is following the orders of the Bhagavad Gita perfectly. So a king is basically, that's why he is called the enforcer of the law made by God. And that's what Maharaj Parikshit is saying here. That Ragyo hi paramo, the highest duty of a king is Shasato Nyan Yatha Shastram. Shasato Nyan Yatha Shastram. That he must follow or he must abide. You see, Yatha Shastram.
he must abide to the Shastras. He must abide to the injunctions of the Shastras. So a king is an ideal king only when he follows the Shastra, he follows the Vedic scriptures, and Shasato Nyan Yatha Shastram Anapadyotpata Utpathaniha. So it's the duty of the king to punish a person who is a miscreant, and he should exactly rule according to the direction of Shastra, the direction of Vedic scriptures. And if it does not do that, then what will happen? If it does not do that, then we will see in the next few sessions that what happens to a king who is not ruling according to Shastric injunction. So Maharaj Parikshit, he is saying here in the shloka that every king must be a law abiding. He must also follow the laws. Not that simply he is speaking, he is telling everyone to follow the law and he himself is not following. Then that is not the king. Right? So he himself is a follower of the Shastras and he enforces this law on everyone. He wants everyone to become a devotee of God ultimately. That is what king is all about. And he's saying, Shasato Anyan Yatha Shastram. There are some injunctions in the Shastras for some emergencies. You see here. Shasato Anyan Yatha Shastram means emergency. So sometimes in emergency, some things can be allowed. Sometimes. For example, if a person suddenly goes to Antarctica, now he will have nothing to eat. Right? So in that case, what he should do? Whatever he gets to eat, he will eat. But that is not for a Kshatriya, or that is not the system for people who have got all facilities, but just for the palate of the tongue, they are killing animals and eating. Right? So during exceptional circumstances, sometimes during emergency, some things can be allowed. But here Maharaj Parikshit is saying, but ordinarily, such things must not be allowed. And it is a duty of the king to punish such miscreants who are lawbreakers in the society. So all of you can like the video, you can comment on the video. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि किस तरह से महाराज परीक्षित जो हैं वो बहुत ही क्रोधित हैं इस दुष्ट कली पुरुष पे, जो कलयुग की पहचान की तरह एक इंसान है जो शूद्र है लेकिन वो क्षत्रिय का वेश धारण किया हुआ है और जो एक गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। तो महाराज परीक्षित बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि हमारे पूरे कुरुवंश में, हमारा जो पूरा कुरुवंश है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके राज्य में इस तरह से मासूम जानवरों को या मासूम लोगों को मारा जा रहा। वो बहुत दुखी हैं, बहुत प्रताड़ित, बहुत क्रोधित हैं उस कली पुरुष पे। और अब हम देखते हैं आगे और क्या महाराज परीक्षित कह रहे हैं। तो 12वां श्लोक। को वृश्चत्तव पादां स्त्री सौरभेय चतुष्पद मा भुवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को वृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। He, Maharaj Parikshit, repeatedly addressed and questioned the bull thus: O son of Surabhi, who has cut off your 3 legs? In the state of the kings who are obedient to the laws of the Supreme Personality of Godhead Krishna, there is no one as unhappy as you. अब आप देखिए, इसका हम अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं और वो बैल से पूछ रहे हैं कि हे गौ माता के पुत्र, तुम्हारे 3 पैर किसने काटे हैं? वैसे राज्य में जहां के राजा भगवान कृष्ण का पालन करते हैं, आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। तो अब आप देखिए, महाराज परीक्षित बहुत क्रोधित, बहुत दुखी भी हैं
गौ माता और बैल की इस दशा को देख के। और वो देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक, कह रहे हैं को वृषत तव पादाम स्त्रीन सौरभ्य चतुष्पदा। को वृषत, किसने काटा, तव पादाम स्त्रीन, आपके 3 पैरों को किसने काटा, सौरभ्य चतुष्पदा, आप तो चतुष्पद यानी आप 4 पैरों वाले हैं, आप तो 4 पैरों वाले जानवर हैं, लेकिन आपके ये 3 पैर किसने काटे। माँ भूवम द्वादृशा राष्ट्रे, इस पूरी पृथ्वी पे जो हमारा राज्य है, पूरी पृथ्वी हमारा राज्य है, इस राष्ट्र में, इस पृथ्वी पे राज्ञाम कृष्णानुवर्तिना, तो इस पूरी जो सृष्टि है, जो हमारा पूरा राज्य है, इसमें कोई भी इतना दुखी नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए हैं हमारे वंश में, सभी कृष्ण अनुवर्ती नाम। देखिए आप अपने स्क्रीन पे ये जो श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं परीक्षित महाराज, कि कृष्ण अनुवर्ती नाम, कि इस राज्य में, हमारे वंश में सभी कृष्ण के अनुवर्ती नाम है, यानी कृष्ण के नियमों के पालन करने वाले हैं हम लोग। तो कोई भी इतना दुखी नहीं है हमारे राज्य में जितने आप हैं। तो किसने किया है ये दुष्टता किसने किया। तो इसीलिए एक राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भगवान के बताए हुए नियमों पे चले। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण अनुवर्ती नाम, कृष्ण के अनुपालन करना, कृष्ण भगवान ने जो नियम बताए हैं उसका पालन कर। लेकिन पालन तो तब करेंगे ना जब वो नियम पता होंगे। भाई जब पता ही नहीं होंगे तो आप पालन कैसे करेंगे, भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो भगवान इसी के लिए तो आते हैं, इसी के लिए तो भगवत गीता देके जाते हैं, ताकि हमें पता तो रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम अगर भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम भगवत गीता का पालन कैसे करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमें तो लोगों को से भी पालन करवाना है, वो कैसे होगा। तो इसीलिए हर राजा का ये धर्म है, हर राजा का ये दायित्व है कि वो स्वयं पहले भगवत गीता जाने और भगवत गीता के अनुसार वो प्रजा पे शासन करे और प्रजा को भी भगवत गीता का अनुपालन करने करवाए। ये राजा का महत्व, ये राजा का धर्म है, ये राजा का कर्तव्य है, दायित्व है। और जहां भी भगवान कृष्ण के बताए हुए नियम का पालन नहीं होगा, वहां पे सारी प्रजा दुखी रहेगी, कभी वहां पे सुख समृद्धि शांति नहीं हो सकती। और जहां पे भगवान के बताए हुए नियमों का पालन होगा, वहां पे अपने आप सारी शुद्धता, सारी सुख समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित देख रहे हैं कि वो जो बैल है उसके 3 पैर काटे हुए हैं और एक एक पैर पे वो चल रहा है। तो ये तब होता है जब समाज में ढंग के राजा नहीं होते और वो लोगों को दंड देना नहीं जानते उनके गलतियों का। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हम देख रहे हैं कलयुग में। 13वां श्लोक, आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनाम अकृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनाम अकृतागसाम
आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। ट्रांसलेशन, अनुवाद। ओ बुल, you are offenseless and thoroughly honest. Therefore, I wish all good to you. Please tell me of the perpetrator of these mutilations which blackmail the reputation of the sons of Pritha. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे बैल देवता, आप तो मासूम हैं और वफादार हैं, शुद्ध हैं, पापी नहीं हैं, और इसीलिए मैं आपका भला चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि किसने ये काम दुष्कर्म किया है और फिर आपको वो तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है जिससे हमारे वंश का जो मान है उसकी हानि हो रही है। ऐसा कौन है जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है कि हमारे पूरे पूर्वजों के मान की हानि हो रही है, यहाँ उनका अपमान कर रहा है। कौन है वो इंसान? आप देखिए, जब भी हम किसी राजा की बात करते हैं, महान राजा की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम ध्यान में आता है? राम राज्य। जब भी हम महान राजा की बात करते हैं तो हमें किसका नाम ध्यान में आता है? भगवान श्री राम, राम राज्य। क्योंकि राम राज्य जो है वो सबसे, क्योंकि भगवान राम जब राजा हो, भाई जब भगवान ही राजा हैं तो उस अवस्था में तो सारे देवी देवता सभी आगे भगवान को दंडवत करेंगे, तो कभी कोई दुखी हो ही नहीं सकता। और जो पांडव हैं वो सारे भगवान राम के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं, वो सब भगवान राम के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और भगवान राम को क्यों राजा राम कहते हैं? ऐसा क्या? आप देखिए, भगवान का जो जीवन है, भगवान श्री राम का, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श बेटा, सब कुछ आदर्श। क्यों? क्योंकि आज तक इस सृष्टि में सबसे महान राजा जो चले हैं वो है भगवान राम। और उन्होंने अपने उदाहरण से बताया है कि जब प्रजा जो है वो परम है, और प्रजा के लिए उन्होंने अपने परिवार तक को बलिदान करने का के बारे में एक तरह से कर ही दिया। आजकल की तरह नहीं, या धृतराष्ट्र की तरह नहीं कि अपने पुत्र मोह में पूरा महाभारत करा दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पुत्र मोह में कुछ नहीं, या पत्नी के मोह में कुछ नहीं किया भगवान राम ने। उनके लिए राजा का जो दायित्व है कि अपने प्रजा में और अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं करना, अपने पत्नी में और अपने प्रजा में कोई अंतर नहीं करना, सब, ये एक आदर्श राजा। तो इसीलिए हम राम राज्य कहते हैं। और उस राज्य में एक भी इंसान दुखी नहीं था, तो वो राम राज्य है। तो सारे जो पांडव हैं वो लोग भगवान राम के ही वही अनुसरण करते। युधिष्ठिर महाराज हो, शांतनु महाराज हो, भीष्म देव हो, सभी। और जो भी महान राजा होगा उसे पता है कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन जानवर है? गाय और बैल, जिनका मल और मूत्र भी शुद्ध होता है। आप देखिए, किसी भी मंदिर जाएंगे आप, तो अगर शास्त्रों के अनुसार अगर आपने अपने मल को छुआ है, मतलब आपने अगर मल विसर्जन किया है, अपना शौच किया है आपने,
तो आपको तुरंत जाके नहाना पड़ेगा, नहीं तो आप मंदिर नहीं जा सकते बिना नहाए शौच करने के बाद। तो नहाना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है शास्त्रों के अनुसार। अब सोचिए कि भाई कोई कह सकता है ना, जैसे मंदिर में हम देखते हैं कि गाय का जो गोबर है वो भी तो मल ही है किसी जानवर का, लेकिन उसको शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, यज्ञ में प्रयोग करते हैं। आप सोचो, कोई कह सकता है ना कि अरे इंसान का जो मल है वो तो हम अछूत है, लेकिन गाय का मल इतना, बिल्कुल गाय इतनी शुद्ध जानवर है। और उसका मूत्र जो है गौमूत्र, वो तो बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत सारे उसमें जो पंचगव्य से तो कैंसर सही हो जाता है। तो गाय इतनी महान जानवर है और उसको अगर नहीं सुरक्षा की जाएगी तो फिर ऐसे राजा का क्या महत्व है। तो इसलिए यहाँ पे महाराज परीक्षित दुखी हैं कि किस तरह से उनके जो पूरे वंश का, उनके पूर्वजों का मान जो है वो उसका मान खराब हो रहा है, जिसके लिए वो बहुत दुखी है, परेशान। 14वां श्लोक। जनेनागस्य घम युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधु दमने कृते। जनेनागस्य घम युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधु दमने कृते। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Whoever causes offenseless living beings to suffer must fear me anywhere and everywhere in the world. By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। जो भी महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जो भी मासूम लोगों को मारेगा, उन्हें तड़पाएगा, उसे मुझसे डरना चाहिए। इस पूरी सृष्टि में वो कहीं भी हो, उसे मुझसे भय होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मार के हम साधुओं का उद्धार करते हैं। अब आप देखो, ये राजा होता है, इसे राजा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जने नागसी, मतलब जो जिन्होंने पाप नहीं किया है, जो मासूम लोग हैं, अघम युंजन सर्वतोस्य चमत भयम, अगर जो पापी लोग हैं, अगर वो मासूम लोगों को प्रताड़ित करते हैं तो मद भयम, उसे मुझसे डरना चाहिए। पूरे विश्व में कहीं भी वो हो, उसे मुझसे भय होना चाहिए, क्योंकि साधुनाम भद्रमेव स्यात्, क्योंकि साधुओं का अगर भद्रम, भद्रम मतलब उनका अच्छा करना है, उनका अच्छा चाहना है, उनका भला करना है, तो असाधु दमने कृते, हमें असाधु यानी जो राक्षस हैं, जो दानवी प्रकृति के लोग हैं, उनका दमन करना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा। आप देखिए, तो ये एक राजा होता है, आजकल की तरह नहीं। अच्छा, तुम गाय को मार रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम गाय की पूजा करते हो, कोई बात नहीं। सबको साथ में लेके, ऐसा नहीं होता राजा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई राजा नहीं होता। जैसे हमारे इतिहास में भी आता है कि हम सनातन धर्म के जो लोग गए गांधी के पास, गांधी जी के पास, कि आप, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग गाय को मारते हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते? तो गांधी क्या कहते कि अरे मैं कैसे मना करूं, ये तो उनका धर्म है, मैं क्या बोल सकता हूं। अब आप देखो, मतलब कोई भी जो मन में आए धर्म कुछ भी बना सकता है ना। इस हिसाब से तो मैं भी फिर एक धर्म बना देता हूं। अब मुझे भी कुछ लोग पालन अनुसरण करते, तो मैं भी एक धर्म बना देता हूं कि भाई हमें, जैसे किसी धर्म में गाय को मारने का बना है, तो मैं इंसानों का मारने का बना देता हूं कि इंसानों को मार के खाना है।
तो क्या आप धर्म के नाम पे इसको भी आप अपनी सहमति दोगे? ये क्या बकवास चल रहा है? कोई भी कुछ भी धर्म बना सकता है। 7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो 7 अरब धर्म बना ले सभी। ऐसे बनेगा धर्म, ऐसे चलेगी सृष्टि। हमारे अनुसार जो मन में आए हम करें। और इन लोगों को हमने राष्ट्र दादा पिता माता पता नहीं क्या क्या बना रखा। अब देख, तो राजा का मतलब वो सबको खुश रखने वाला, उसको राजा नहीं कहते। जहां पे उसे दिखा कि ये दुष्ट है, तुरंत मार देता है राजा, तुरंत उसको दंड मिलता है। तभी इस सृष्टि में शांति सुख और समृद्धि हो सकती है। नहीं तो हम सुख और समृद्धि और शांति इस सृष्टि में नहीं, हमें हम स्थापित नहीं कर सकते। तो राजा का मतलब प्रजा का भला चाहना। लेकिन प्रजा का भला का मतलब क्या होता है? भौतिक सुख देना वो भला नहीं होता। पहले तो राजा स्वयं कृष्ण अनुवर्ती नाम, हमने पहले श्लोक में देखा था, भगवान कृष्ण का उसको भक्त होना चाहिए। और वो उसकी इच्छा ही होनी चाहिए कि सभी को मैं कृष्ण भक्त बना दूं, ताकि सृष्टि में कोई दुख परेशानी हो ही नहीं। पंद्रहवां श्लोक, अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम्। अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद, an upstart living being who commits offenses by torturing those who are offenseless shall be directly uprooted by me, even though he be a denizen of heaven with armor and decorations. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि एक नौसिखिया इंसान जो प्रताड़ित करता है मासूम लोगों को, उसे मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, भले ही वो स्वर्ग का निवासी देवी देवता क्यों न हो। अब आप देखो राजा को कितना शक्तिशाली होना चाहिए, वो यहाँ पे महाराज परीक्षित बता रहे हैं। अब देखिए इस श्लोक में कह रहे हैं अनागस यह भूतेषु या आगस्कृ निरंकुशः, कि जो अनाग मीन्स जो मासूम लोग हैं, उन्हें उन्हें अगर इस तरह के निरंकुश मतलब जो इस तरह के लोग हैं जो नौसिखिए हैं, जिन्हें धर्म का पता नहीं है, अगर वो उनको प्रताड़ित करते हैं तो आहर तास्मी भुजम साक्षात, उसको मैं अपनी भुजाओं से उखाड़ फेंकूंगा इस धरती से। भले ही वो अमर तस्यापि, अमर, अमर देखिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया, भले वो अमर ही क्यों ना हो। अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब होता है शाश्वत, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसे अमर कहते हैं। तो अमर कौन है? देवी देवता। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवी देवताओं को अमृत पिला दिया था भगवान ने, तो इससे वो अमर हो गए। अब क्या सच में वो अमर हैं? नहीं, अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन उनकी जो आयु है वो इतनी लंबी है। अब जैसे हमारी आयु होती है 100 साल की, और देवी देवताओं की आयु पता है कितनी होती है? करोड़ों सालों की। तो अब इतनी लंबी अगर किसी की आयु होगी,
तो अगर हम अपने अनुपात में उसको देखेंगे तो वो तो अमरता जैसा ही हो गया ना भाई। अगर कोई 100 साल जी रहा है तो उसके लिए 1 करोड़ साल तो अमर ही हो गया एक तरीके से। तो इसीलिए उन्हें अमर कहा जाता है। वैसे अमर भवर कुछ है नहीं, जैसे हमारी मृत्यु होती है उनकी भी होती है, बस वही है कि उनकी आयु इतनी लंबी है कि ऐसा लगता है कि वो अमर है। अमर कोई नहीं इस सृष्टि में। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो मासूम लोगों को प्रताड़ित करता है, तो वो अगर देवी देवता ही क्यों ना हो, मैं उसे इस सृष्टि से उखाड़ फेंकूंगा, मेरी भुजाओं से उसे मैं नष्ट कर दूंगा। तो मैं महाराज परीक्षित कह रहे हैं ऐसा एक राजा को होना चाहिए। ऐसा राजा ही शासन कर सकता है और ऐसे राजा के शासन में ही सही सत्ता हो सकती। तो सही राजा हमेशा महाराज परीक्षित जैसा होना चाहिए। डरपोक होने वाला, डरपोक आदमी राजा नहीं हो सकता, उसे निडर होना चाहिए। 16वां श्लोक। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथानिह। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथानिह। Translation: It is the supreme duty of the ruling king to give all protection to law-abiding persons and to chastise those who stray from the ordinances of scriptures in ordinary times when there is no emergency. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। एक राजा का परम धर्म है कि वो सारी सुरक्षा दे एक नियम पालन करने वाले नागरिक को, और उन्हें दंड दे जो आपातकाल छोड़ के बाकी समय में नियमों का पालन नहीं करते। तो अब आप देखिए क्या कह रहे हैं कि राज्यो ही परमो धर्मो। राज्यों का मतलब कि जो राजा है उसका परम धर्म, उसका कह रहे हैं कि सबसे उच्चतम धर्म क्या है। स्वधर्म स्थानुपालनम, कि पहले तो वो धर्म का, स्वधर्म का यानी अपने धर्म का सही से पालन करे। स्वधर्म स्थानुपालनम, अपने धर्म को ढंग से पालन करे। शासतोन्यान यथा शास्त्रम, स्वधर्म स्थानुपालन, कि पहले तो उसे अपने स्वधर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए। स्वयं पालन करे नहीं और दुनिया को बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, वो फायदा नहीं करता। तो पहले उसे स्वयं पालन करना चाहिए। शासतो न्यान यथा शास्त्रम, फिर जो ऐसे लोग हैं जो नियम का पालन नहीं करते, आपातकाल स्थिति को छोड़ के, यहां पे देखिए श्लोक में कह रहे हैं शासतो अन्यान, यानी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जो आपातकाल की स्थिति है जिसमें आप नियम पालन नहीं कर सकते, उसके अलावा अगर कोई नियम को तोड़ता है तो फिर उसे तुरंत दंड दे के मार देना चाहिए। तो ये महाराज परीक्षित यहाँ पे कह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी अवस्था आती है जिसमें हमें नियम उतरे हम अच्छे से पालन नहीं कर पाते, लेकिन नियम पालन करना असंभव नहीं है। अब कोई ऐसी जगह चला गया जहां पे कुछ मिलता नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे अगर कोई गलत चीज कर ले तो चलो समझ में आता है, गलत वस्तु खा लिया क्योंकि उसे अपने आप को जीवित रखना है। लेकिन अगर वो साधारण, जब आपातकाल की स्थिति नहीं है उसमें वो सारे नियम तोड़ रहा है, बेचारे मासूम जानवरों को ताड़ित कर रहा है, तो फिर उसे तुरंत दंड मिलना चाहिए, उसे तुरंत मृत्यु दंड मिल जाना चाहिए। तो महाराज परीक्षित यहाँ पे भी कह रहे हैं
तो आप लोग सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज हम अपने सत्र को यहीं विराम देंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। हरे कृष्ण।